Dr. Manish Kumar, Senior Scientist, IMT, Dr. Panika, Solution Control Board, and Dr. Sabri Kumar from GIH, Dr. Jayashankar Das from Element Coach, doing my good work for converting the urban organic waste into insect larvae or the protein. So I start with Dr. Manish Kumar from IIT, from IMT. That particularly actually means you can actually introduce your research a little bit, and followed by means you can actually your recommendations particularly in this area. Thank you. Subhadji. Thank you, Pradhanji, and first of all, I wish to thank Vasudha and Quiver sir for giving me opportunity. I am working as a principal scientist in CSIR in Environment and Community Department. My main focus of research is upsist प्रबंधन के dependent primarily agricultural waste, and we have also utilized industrial waste also, but the forum is for urban development. So agricultural waste, whatever is coming to urban area, because most of the agricultural activities are taking place in the rural area or fringe area, we can call it as peri-urban area or the village area, but those all things are coming for marketing in the urban area. Now, how to manage those waste which are landing on day-to-day basis? I just wish to narrate my story or what we did. ମୁଁ गोटे पीएचडी स्टूडेंट सागरे मिसी की कदली रे भंडा माने फल भेंडर से थ्रोइंग ताकू नै कि 2015 मसिया रे गोटे कार्य आरंभ करली। खाली गोटे ही कांसेप्ट दिला मोर मन रे कि कदली गोटे गाछ अछि प्लांट से पोटेशियम रे प्रचुर मात्रा तारु भितरे मौजूद अछि और चाष पई पोटेशियम इज वन ऑफ द प्राइमरी न्यूट्रिएंट and we are all importing 100% potash. माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाची 100% potash import करूची माने फार्मर्स को देबा पई. And being an environment science practitioner or you can say researcher, circular economy कहबा गले केंती माने चक्रीय इकोनॉमी अर्थव्यवस्था माने गढिबो सेटार वेस्ट टू वेल्थ गोटे कोर वैल्यू नहीं किया से और सेठी शुरू हुए आरंभ गोटे एंटरप्रेन्योरशिप रे और मु भंडा को नहीं कि गोटे प्रोडक्ट मार्केट रे जयदेव बनाना फार्मर्स एंड आर्टिजन एसोसिएशन बालीपटना रे अछि जयदेव पीठ पाके से माने आईएमटी संगे जुड़ी की से टेक्नोलॉजी को ग्रहण करिले और नाउ ही इज सेलिंग दैट प्रोडक्ट टू द मार्केट. नाउ रिसर्च इज अ डिफरेंट थिंग, production is a different thing, and the biggest challenge is marketing. माने लोक माने जिनिस को बॉडी पड़िबे तैयार करि पड़िबे लेकिन जदी मार्केटिंग रे फेल जिवे माने सब कुछ फेल से रिसर्च भी आजिकली गवर्नमेंट सिस्टम में भी हुआ जाउछि कि यू हैव टू वर्क hand in hand with the entrepreneurs in the beginning. That's why incubation center concept माने परिपालन होछि विभिन्न इंस्टीट्यूट रे और माने एटा कुहा जाउछि कि जा भी प्रॉब्लम जदी चासी माने पाखरे या एंटरप्रेन्योर पाखरे आछे सेटा को जदी रिसर्च इंस्टीट्यूट पाखरे के आसीले से इंक्यूबेशन सेंटर रे आपको बढ़ा दिए जीवो तार केंती आईपी राइट प्रोडक्ट हेबो से तार पाई भी माने तैयारी करि दिए जीवो और विभिन्न इकोनॉमिक एंगल रे जे नबार्ड अछि या फंडिंग एजेंसी अछि ताकू भी माने आपन रे जोगाजोग करि दिए परिबे. सो से इंक्यूबेशन सेंटर जे अछि माने सब रिसर्च इंस्टीट्यूट रे परिचालन रे अछि और अर्बन वेस्ट को कहबा गले एटा ह्यूज plethora of urban wastes are there, like plastic is also big thing, compostable waste are big thing, wood waste are big thing, building material waste are a great thing. So these all are needed to be reutilized for making our urban development a sustainable development, I should say. So I am doing only a bit of it, but lot of opportunities are there. माने कहबे गले असंख्य माने opportunity अछि लेकिन लोक माने करि पारु नांती सेटरे विभिन्न प्रकार रे हिकअप रहि जाउछि. रिस्क टेकिंग बिहेवियर इज नॉट देयर इन आवर सेट. आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमको लोक कहबे कि 10 लाख इन्वेस्ट करंतु गोटे टेक्नोलॉजी अछि मु बोधा मु हाथ टाकू
पीछे करेंगे कहीं से I don't know where to go, how to go. मु तो धर्मा नौची माने धर्मा नहीं की रही जीवे. That is a spark is need to be imbibed and grown, and even government is now allowing with my technology. If I want to take it further, से माने government भी कोच होती कि अपनी निजे को माने एक industry सर्विस सेट कर पाए एंटिया नहीं. But mindset is a very critical thing. Because once I work in a government setup and if I take any private affair, then people think I am just deviating the resources to the private one. So seta mane ke mane it start to the thinking process mane ke beneficial hoba. लेकिन environment domain रे कहले को बोले if all are not connected, probably days are very few for us and we are seeing the music. कहले को बोले road रे mane thousands of vehicles are flying and गोटे गर्त करिबा रे गोटे सिविल इंजीनियरिंग वर्क चालुची सेते गड्ढाटा रही जाईची. विभिन्न जगह जाऊँ से टाइम को मैंने इंतजार करूँ. So I really thank Vasudha and the solution perspective are many. Even as a researcher, we have to also revive ourselves. Everywhere there is a need of quality improvement, work culture improvement, integration issue, and working together for a common goal. Those all things are basics. Whatever you do, unless and until we combine our effort, successfully देई परिबनी. मु आउ गोटे कथा कहबी सस्टेनेबिलिटी पाई तीन चारटा को waste रहिबा कथा. That is the core because transporting the waste is itself a big issue. So we need to look the angle in a holistic way. Thank you once again for giving me. Thank you very much. Problems, okay, we will be coming also to listen some more problem and followed by your recommendation. Yeah, so next time, when actually, sir, you were telling about waste to wealth. So, Dr. Jaishankar Das. So, I request him, okay, from Element Rose, okay, so like how he is converting this organic waste into some type of like this animal feed or the fisheries feeds.
So who has been working in sustainable aquaculture and GIZ in a larger sense. Okay, like they are working in also on soil in national level. So Sandeep ji, okay, means just upon focus karibe. Focus karibe. Mostly, actually, how the urban waste, particularly sewage as well as the solid waste, okay. So its impact on your case studies, in case study of your impact on soil or the nearby areas of the cities, and any work from your organization on that. So let me introduce myself. So everyone told I am Sandeep Nayak. I work as an advisor with GIZ, and I have been working in the last 3 years. Few projects I have taken over, few have completed, few are running on. Technically, I am from Odisha, and very fortunately I am also from OUT, and it is a pleasure to be here and discuss on things. So technically I am an agri, masters in agri, and this is why when I joined, my always the focus point, the focal point which I revolve around is always the farmers, and this is where the thinking process, the entire bhavana, soch behind every action, all the decisions that have been made in my projects are taken care of in that angle. I had come to urban waste because this is something that our other partners, the other projects of GIZ are taking care of, and I have experiences with being with them. One of such experiences that we have recently collaborated with multi-party organizations. One is Quiver, of course. There we are looking into how do we use the grey water in urban and small rural system, and how can we leverage this price for an environmental solution kind of situation there. So it's very much in line with the G7 presidency of Germany, where this compound section was being looked at, and वहाँ पे हम लोग हमें यार चिंता कर चुके कि ग्रे वाटर को केमिकली फाइटोरेमेडियल मेजर से पकेगा को केमिकली यूज करे और रीयूज करे और there are few examples in Andhra Pradesh, Telangana, where they have been using in sugarcane crops and being used as, of course, sugar. But other aspects are still pending, such as agriculture in urban, small urban structure which are growing really fast, and we might need in future 10-15 years we need to have a proper solution to this. Of course, we cannot mix sewage and grey water; both are two different things. But grey water easily can be used in different multi-purpose initiatives. What I would ask the startups or the innovators to look into, how can we put quality checks, and how can we automate this process of phytoremedial. Basically, what it does is you run through a series of sedimentation process, and you get the final output as a clean, usable, reusable water. But what do you do with this reusable water? How do you know this is ready to get in the system? When a SSG or when a women-led organization, man-led organization comes in and does the next steps, these gaps are there, and this has to be filled up. And I will immediately pivot into the quality check of our culture systems, our food systems. So we are talking a lot here in the very morning, where we are talking, we need to do marketing, we need to do a lot of things. One of the things that I think we missed out in Indian context, we run a lot behind the production, yield, productivity, and we are very much not focusing on the profitability, income. And this is one of the key reasons people take
extreme measures to yield more without calculating the risk and benefit ratio. And significant contribution towards this is, of course, our beautiful green revolution. But apart from that, one of the key contribution of non-changing of attitude towards our established systems. For example, we have, I'm taking fisheries as an example. So we have this thing called broodstocks, where seeds are, the fingerlings are produced out of good quality breeds. And these breeds are in general, it's a thumb rule that if an NFDP produces it, then it's a highest quality of brood. But the question is it? How do you check? What is your parameter? Is it available publicly? Who can access it? What is its reachability? What are the checks you did to achieve that, okay, this brood is the highest quality? If yes, then okay, broods are highest quality. But all sons and daughters of all the human beings are not in same level, right? Then there is also changes in different genetical and physiological attributes of these fingerlings. Where is the monitoring system? What is the tech in it? What kind of situation, what kind of analysis we are doing in a large scale production of shrimp hatcheries? Let us forget about the freshwater thing. Let us talk about this big thing of shrimp culture, where tons, millions of USD are being invested. What are the tech being used to analyze what kind of shrimp seed is being produced? What is the way to determine, okay, what I am doing or what is being delivered to the farmers who is spending his money or her money, the best quality systems. All checks are completely missing. Even though there are, it's not technically, people say it's not possible, but technologically it is now quite feasible. There is, I'm giving you an example for the innovators to think on it. There is this technique called segment anything method, SAM, which is being used in salmons in Norway. They check all the individual fingerlings, their growth, their capacity, are they feasible to go into the sea or not. It's a very similar kind of tech being used in Israel, being used in France. But the only problem is that the adaptability and the translation to Indian context needs to go through a certain turbulences to reach to end user. So basically what I am saying, urban water, the wastewater, or any kind of water system that we are going to use or should be used, we would need a thorough check system before going into the environmental ecosystem. And I talked actually from A to Z, kind of pulling all the strings here, and there's a little bit confusing kind of scenario here, because my topic and what I am trying to convey are very wide and it needs more segmentation. But overall, if I look into current scenario, what we need is a robust back-end education system for the farmers with all these informations in it. And we need to stop also doing this thing called farmers are culprits and farmers are the key to all the problems, because ultimately what we lack is getting information to the farmers in the right sense, and their capacity to understand the need and ask right questions. If they won't ask questions, we keep telling them, do this, do that, do this, do that. So ultimately, at the end of the entire generation, we will find out same thing being happening, which was happening in 1970s, 60s. So maybe a little bit tweaking in the education system of farmers. I mean, the extension mechanism following the andragogy, where adult learning can be infused, can a bit more effective in terms of making them take informed decisions. I stop.
Thank you. Okay, so thank you. Okay, bit interesting, but even though a little bit diverted from the means actual scenario, but yeah, but a bit interesting in that aspect. So, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କରୁ कि ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକର ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ particularly the sewage सी ଆମର ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ରିଜିୟନ ଆମର ମହାନଦୀର ଡେଲ୍ଟା ରିଜିୟନ particularly ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଆଉ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ସେମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସିୱେଜ ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କେତେ କାପାସିଟି ଅଛି ଆମର ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। Good afternoon, all of you, and thanks to Vasudha to invite me as a resource person, so to say. Dr. Pradhan has given me a very big task because it is a difficult task for me. So far as agriculture is concerned, I can say about the environmental point of view, all these things, but the impact of agriculture, urban production, particularly, हमें urban production कहले दुईटा तीनटा जिनिस को बुझो, गोटे ला waste water, आउ गोटे ला solid waste, out and air pollution. हमें पर्टिकुलरली एयर पोल्यूशन पे समस्त प्रकार व्यस्त हो कारण दिल्ली रे एयर पोल्यूशन बहुत अच्छी आज भी भुवनेश्वर रे आज ऑन टुडे यही समय एबे भी बोले 268 की 269 अछि भुवनेश्वर PM 2.5 जोटा कि 60 रहबा तेनो कटक भुवनेश्वर अनुगुल तालचेर कलिंगनगर बालेश्वर झारसुगुड़ा ओडिशार ये जो 7टा सहर अच्छे आम ये 7टा सहर में एयर पोल्यूशन बहुत अधिक अच्छे यहाँ अच्छी सिंस 1995 माने आम जो मॉनिटर कर पोल्यूशन कंट्रोल किंतु आम सीरियसली जदि सरकारी भाव में मत कहे तो सरकारी भाव में गोटे लाइन में कहीदेवी वी आर अचीव्ड ए लॉट This to be quoted. कारण सरकारी भाव में जब मत कहे मु भुवनेश्वर सहर में किसी पोल्यूशन नहीं भुवनेश्वर इज ए ग्रीन क्लीन सिटी आम कहूँ भुवनेश्वर में आपणकर 45टा MCC अच्छी माइक्रो कंपोस्टिंग 45 माइक्रो कंपोस्टिंग अच्छी एवं आउटे ताकू जस्ट ता पाखे 44टा मटेरियल सेपरेशन अच्छी जोटा जो आपण नहीं जो आपनकर प्लास्टिक आकू मेटल सब को सेपरेट ट्रमेल को ट्रमेल सिस्टम नहीं এটা ম্যাটেরিয়াল সেপারেশন সিস্টেম ইটিপি नहीं যেমন ইটিপি সেপারেশন আমি কোন করছু মানে বিএমসি কোন করুজি বর্তমান सब ম্যাটেরিয়াল को कलेक्शन कर दो कलेक्शन कर दे आपन को मेटल प्लास्टिक ये सब को अलग कर दो बाकी ऑर्गेनिक वेस्ट को एनसीसी रे माइक्रो कंपोस्टिंग करछ दिस इज ऑल थ्योरी गोटे भी माइक्रो कंपोस्टिंग काम करूँ रियलिटी तेणु किसी प्लास्टिक ये सब मेटल सेपरेट करके बिकी दौर हाँ एवरीथिंग इज देयर मुझे तो सरकारी भाव में जब कहे किसी भी वेस्ट नहीं आम सब वेस्ट को यूटिलाइज कर जीरो वेस्ट कि बेसरकारी भाव में जब आप देखिए
आपणकर सैनिक स्कूल पूरा केंद्र सेवा पचार बोले आपन तो सब यूटिलाइज पहाड़टा को आसला ताकर उत्तर है कि पहाड़टा आगे आगुरी अच्छे जेनरेट कर यूटिलाइज कर तेणु ये सरकारी सिस्टम को बोलपाई लास्ट मॉर्निंग रे बहुत जिन शुणुली मुझे सरकारी सिस्टम में किसी जदि मत पचारे मोर 30 वर्ष एक्सपीरियंस कहि सरकारी सिस्टम में किसी केबे कोठी किसी प्राइवेट लोक किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बाहर को आसती से काम करती तांकू फॉलो करते लोक माने करते ओडिशा गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन कला बोली कहूँ गवर्नमेंट बहुत बहादुरी मारुचे आम इंडस्ट्रियलाइजेशन छुट तो केतेटा इंडस्ट्री गवर्नमेंट करला आयरन रो डिमांड बढ़ला वर्ल्ड मार्केट रे सेते आई जो स्टील इंडस्ट्री वाला आसिले ओडिशा कारण एठी आयरन ओर अछि एठी पानी अछि कोयला अछि तीनटा जाक जिंस जेतु अवेलेबल अछि से माने स्टील प्लांट पे एठी आसी तो से पे मु करे सरकारी लेवल कोनोसी जिंस हे परिबो नाही ई जो एग्रीकल्चर आपन कहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर केते बेले हे परिबो किछि लोक जो बायो फर्टिलाइजर यूटिलाइज करके जदि से देखै लेबे जे आमे बायो फर्टिलाइजर रे वायबल करी प्रोडक्शन बहुत अधिक करिछु ताहाले लोक कन्वर्ट हेबे केमिकल फर्टिलाइजर रु बायो फर्टिलाइजर सेटा जे पर्यंत न होईछि केबे कोनोसी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज बंद हो नै कारण आमर भी चाष होछि मोर 25 एकर जमीन अछि गाँ एवं मुझे चाष करूँ मैं चाष मुझे करूँ लोक चाष कर केमिकल फर्टिलाइजर यूटिलाइज करके से जेनरेट कर वर्ष के 200 क्विंटाल धान बाहर कारण धान रेट बढ़ी जाए तेणु 200 क्विंटाल धान है से बहुत पैसा पाइबे तेणु जब कंपटीशन या हम से कहीं चिंता करेंगे आप बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज करेंगे तेणु आम जेपर्यंत से जो अल्टरनेटिव न देचु सेटा से आसबे ना यहाँ हूँ रियलिटी सेमती आम जेपर्यंत पल्यूशन अल्टरनेटिव ना धरत आम भुवनेश्वर काली कहबू आम मझे के 2016 मसीह भुवनेश्वर एयर पल्यूशन आम कहलु ई वेहिकल आरंभ हो बर्तमान ई वेहिकल किसी आसूची बर्तमान गवर्नमेंट कौन कही जिते वेहिकल किणा सब ई वेहिकल किणा कि मोर आउ गोटे प्रश्न है जदि इलेक्ट्रिक वेहिकल किणा तार पल्यूशन लोड बढ़ आज ना तार जो बैटरी आसो सी गोटे हाजार्डस वेस्ट तेणु हैंडल करने पुणी आउ गोटे वेस्ट को आम जेनेट कर जो इलेक्ट्रिसिटी जेनेट हम इलेक्ट्रिसिटी जेनेट करने पुणी माइनिंग को यूज करूँ अधिका कोयला जेनेट करूँ अधिका पावर प्लांट जेनेट करूँ अधिका पावर जेनेट करूँ तेणु सस्टेनेबिलिटी आसो कौन तेणु सस्टेनेबल डेवलपमेंट आम 92 मसीह डिसाइड कर वर्ल्ड सारा विश्व रियो शिखर सम्मेलन में कहला कि आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करूँ आम से दिन सस्टेनेबिलिटी गोटे वर्ड्स माने यूज करूँ सब एनवायरमेंट सस्टेनेबल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट किंतु आज पर्यंत से आचिक हो पारे 30 वर्ष हो 32 वर्ष हो तेणु आम सब गोटे प्राक्टिकल जिनस को मोर फंडामेंटाल है आम प्राक्टिकल जिनस को यूज करवा जोटा आम पाखे अवेलेबल अच्छी से टेक्नोलोजी आम केमती कर तो यहाँ है आम सल्यूशन बाट सार को दुटा टास्क मत कटक भुवनेश्वर आमर भुवनेश्वर बर्तमान 120 मिलियन लिटर्स वाटर्स जेनरेट हो वेस्ट वाटर जेनरेट हो ट्रिटमेंट करने गोटे 6टा एसटीपी करूँ बोली प्रपोजाल आसला 2009 मसीह से बोधे 3टा आउ 2टा अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छी से जो 3टा
से सरकारी भाव आमको कहते जे आज्ञा आम 4टा चलुची 4टा चलुची मुझे प्राक्टिकल देखी गोटे अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छी पूरा कम्प्लीट होती सरकारी भाव आमको लिखिक जे 4टा चलुची अच्छा जदि 4टा चलुची धरा जाऊ 4टा चलला ताले गंगुआ रिवर वाटर क्वालिटी कहीं खराब होची गंगुआ इज द इंडिकेटर ऑफ भुवनेश्वर गंगुआ रिवर जो दिन वाटर क्वालिटी मेंटेन हो गला आमे जानिबु जे भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी ता वेस्ट वाटर को सेदिन मेंटेन कर एवं गंगुआ जरिया रे पानी जाई आपण टोटल डेल्टा रे आपण तार इफेक्ट अप टू चिलिका पर्यंत अछि भुवनेश्वर वेस्ट वाटर रो इफेक्ट अप टू चिलिका पर्यंत अछि हम स्टडी करछु एग्रीकल्चरल इंपैक्ट ता कोन मु कहि परिबिनी माने कोरिलेट करिनु आमे बट वाटर क्वालिटी रो जो इंपैक्ट अप टू चिलिका पर्यंत रही से पानी गाधिबा उपयोगी भी नहीं पीवा तो दूर कथा तेणु यहाँ हूँ वाटर क्वालिटी ऑफ भुवनेश्वर अब एयर क्वालिटी तो मुझे कहली एबे भी 256 अच्छी माइक्रोग्राम जोटा कि तार बहुत अधिका आ सॉलिड वेस्ट रो स्टेटस तो मुझे कहली आपको सॉलिड वेस्ट रो स्टेटस हो जे प्रकृत रे सॉलिड वेस्ट किछि माने जे पानी आदि भुवनेश्वर तेणु ये सिचुएशन बहुत सीरियस अच्छी यहाँ सत यार दिन सल्यूशन हो गोटे मोर जहाँ एक्सपीरियंस भुवनेश्वर ऊपर आपण जदि वेस्ट टू एयर्स को जीवे ताहले ताकू पावर जनरेशन करके दिल्ली रे जंदी हिची सेमती हमको दुईटा पावर प्लांट करियो जोटा प्रपोजल थिला 2015 मसिया रे somehow that हे पारे बट भुवनेश्वर वेस्ट को यूटिलाइज करके हमने दुईटा पावर प्लांट करि परिबा अप टू 30 मेगावाट पावर जनरेट करते तो सेटा होची गोटे बेस्ट सॉल्यूशन सेटा जदि हे जाई पारिबो मु भाबुजी सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम ता सॉल्व हे जाई भुवनेश्वर आ वेस्ट वाटर रो प्रॉब्लम मु जहां देखुची मते कहीं लागुनी नेक्स्ट 10-20 इयर्स भितर सॉल्व होला बडा हे परिबो ना कारण गंगुआ को आम जिते जहाँ कले भी गंगुआ क्वालिटी आम मेंटेन कर परिबो ता जोड़े कारण गोटे होची आम सीवरेज सिस्टम करिछु फॉर दी रिकॉग्नाइज्ड कॉलोनी एवं रिकॉग्नाइज्ड कॉलोनी रे भुवनेश्वर रे जति लोक रहउछन्ती ताटो अधिका लोक रहउछन्ती आपनकर बस्ती रे जहाँ पे कोनोसी व्यवस्था नहीं तो अल्टीमेटली तांको वेस्ट वाटर से गंगुआ को जीव तेणु से ये जहाँ कहले भी सरकारी भाव में आम कहूँ मत भी लगुच आउ वर्षे 2 वर्ष भितर आप देखिए जे गंगुआ रिवर में कौन वाटर माने वाटर पोल्यूशन ना सरकारी भाव रेकर्ड आस किंतु प्रकृत में से नुहे यहाँ हूँ सरकारी बेसरकारी हिसाब ये सब जिनस को जदि करने को चाहिए आप मैंने बहुत जगह कहे भुवनेश्वर ये जो सिटीजन फोरम्स जे पर्यंत कनसस न हो से पर्यंत किसी पारे कारण लोक मैंने जे पर्यंत प्रश्न न करते से पर्यंत उत्तर आसे आप जिनसा मत पचारे मुझे कहली ये प्रश्न जब कौटे न पचरा ही था आम कौटे कहूँ ये भुवनेश्वर स्टेटस सिमिलारली कटक आप कटक रे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट गोटे थिला 1980 मसीहा माने टोटल ड्रेन पानी जाइए टोटल ड्रेन रे पानी जाउला से ड्रेन पानी को लेकिन से गोटे ट्रीटमेंट करते से ट्रीटमेंट सिस्टम टा डिफंक्ट हो जाइए बोधे 97-98 कारण मुझे कटक रे 96 से 10 वर्ष 7-8 वर्ष पूर्व से डिफंक्ट हो जाता एवं से जो 8 वर्ष पूर्व डिफंक्ट भी होता है भी कहीं रेकर्ड कर मु फास्ट टाइम गली रेकर्ड कली जे सेटा चालू ना मत मो चेयरमैन पचारा एत दिन म्यूनिशिपालिटी कौन चालू तुम कौन कह चालू
ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଯଦି ଚାଲୁଛି ବୋଲି म्युनिसिपालिटी କହୁଛି ଖାଲି ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ टीम ପଠା ଦେବି ସେଠି ତ ମୋଟର ନାହିଁ मोटर जमा नहीं चालू केमी इलेक्ट्रिक नहीं मोटर नहीं चालू केमी देखो नहीं नहीं इटा होती रियलिटी मोर 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 आगे सब बेले फंडामेंटल्स थाए जे गवर्नमेंट विरुद्ध रे नहीं आमे जदी डॉक्टर को कहबा जे हम मुंडटा बिंदुची से मेडिसिन दा दो आपण जदी कहबो मो गोडटा बिंदुची ताले सिटी मेडिसिन दबो गवर्नमेंट टू नो दी रियलिटी आप कौन असुविधा कौन सारा भारत वर्ष रे सबुडी सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम अछि खाली ओडिसा रे आमे गोटे ए जो म्युनिसिपालिटी सॉलिड वेस्ट ऊपर आमे गोटे 10 दिन टूर करथिलो ऑल ओवर इंडिया सब शहर रे से प्रॉब्लम अछि खाली तो हमर नहीं तो आमे एटा लुचेओ कहीं चेष्टा करे सब जति प्रॉब्लम अछि आज्ञा प्रॉब्लम ता अछि कहले उत्तरटा बाहिबो ता सॉल्यूशन के खोजिबो आ जदि प्रॉब्लम नाही बोली प्रथम नु कहबे नाही तो नाही हो कोन ओके सर सो क्षमा चाहिए सर अपनी मत इंटरप्ट करो हमारे स्वामी को बहुत ये जो दुई चार प्रॉब्लम जदि आपण सॉल्व करियो चाहे मोर गोटे सजेशन हला आमे गोटे मु आ गोटे जिन आपन इन्फॉर्मेशन दबा चाहूँ आमे गोटे 97 मसिया रे पूरी शहर रो वेस्ट वाटर को समुद्र कूल रे गोटे कलेक्ट करथिलु से जगहटा कोन बांकी महान रे कलेक्ट करके सेटू पंपिंग करके आमे लेकिन जाउथलु ताळ बळिया एवं से ताळ बळिया सेटा को ट्रीटमेंट करा होतला माने जो माने टोटल जंगल एरिया रे से माटी ऊपर छाड़ देले से ऑटोमेटिकली फिल्टर हे से सिस्टम टा भी सेतला करा हेतला सेटा जस्ट 2 वर्ष चलला तापर बंद गेला तो मु काहे कहूची कि सरकारी सिस्टम रे एटा करले ताकू मेंटेन करबा एते डिफिकल्ट तन सही पारे एबे पुरी रे भी अपन देखि दिए उठे 15 मिलियन टन रो 15 मिलियन लीटर रो चालुची एसटीपी जदि आपण केबे से एसटीपी जिबे देखिबे से एसटीपी चालू मु एबे 10 दिन को रोड जाइते मु आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मु ता चार्ज रे नै बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मु जाइते जे जेटा ओटे आरंभ हेतला कोन अछि आज सिचुएशन मु गली देखली जे से किछि चालू रे एटा होती 2016 मसिया ना 15 रे जेता नवकळव रहला सेतेबे आरंभ हेतला ए प्रोजेक्ट तेणु गवर्नमेंट रो कोटी कोटी गवर्नमेंट गोटे काम करि परिबो जे टंका दे दबो आपण क्षमा करो सेटा ଗୋଟେ ଭଲ मेसेज है ओके हमर जो माने स्टार्टअप माने अछंदी समस्त को के एउटा आह्वान कि सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट करली कि ये प्रॉब्लम अछि तेणु ये सब हम मानकर कलेक्टिव वे रे एटा कोन सॉल्यूशन केति पाई परिबो सेटा को देखिबा बहुत भलो रिकमेंडेशन भी सर करले आ जोटा कहूले सर हमर जोटा विभिन्न संदीप कुमार जी बथ माने मध्य से फोकस करथिले कि बायो रिमेडिएशन और फाइटो रिमेडिएशन माध्यम रे हमर जोटा सीरीज को केति किसी करा जे पारे कोन से ड्रेन करा जे बिल्कुल भुवनेश्वर जो 10टा ड्रेन अछि सेटा एक इनिशिएटिव दिया हैला किंतु से बिल्कुल सेटा यदि केही कोनोसी प्राइवेट संस्था आसीबो रातो ताकू करेबे जति ताले हे परबे सर एटा जति छोटो सिटी रु स्टार्ट करबे अर्बन छोटो जोडा ग्रो करूची सेठू जोटी ऑलरेडी ड्रेनेज सिस्टम अछि विदाउट ड्रेनेज सिस्टम सीवेज सिस्टम मिसिकेशन हो सेठी कले हो एंड बेटर वे इज टू इन जरा कहले सर कि पैसा तो दे देबे बाकी जो मेंटेन होरा हारे डिफिकल्ट बट कम्युनिटी लेड जदी करी हो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जे से और ताले रखुरा कंटिन्यू हो से आमे सर ये जो बायो रिमेडिएशन को क्षेत्र आसुची हमर गोटे अछि एमडी 100 रिलेटेड जिंस आमे एमडी 100 को निके पायलट करथलो बहुत पूरी भुवनेश्वर कटक आ गोटे हमर होची असम रे बहाबिते सो तीनटा जगह हम सेट करथलो तो जोटा कि माने मैनुअल पायलटिंग स्टेजेस को कि माने हम किछि मात्रा सक्सेस मिले छी किंतु सेटा को होची कि हमको मैन पावर नै परिवार टाइप बहुत कष्ट
तेणु ताकू आमे ऑटोमेशन करिवा पई कि आमे गोटे एआई सिस्टम डेवलप करूछु एमडी 100 डिस्पेंसर को हमर एटा वसुधार गोटे पार्ट अच्छा तेणु दैट इज कमिंग सो वसुधा शुड गो अहेड करिया पई